So the most important question as of now in everybody's mind is, सर कौन से सर्टिफिकेशन हम करें जो हमें एमबीए में काम आएंगे, जो हमें एमबीए में जॉब के लिए काम आएंगे, समर इंटर्नशिप के लिए काम आएंगे, एमबीए के इंटरव्यूज के लिए भी काम आएंगे, और ऐसे सर्टिफिकेशंस बताओ जो हमें इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हेल्प करेंगे. सो गाइस, आई होप यू हैव सीन माय अर्लियर वीडियो व्हेन आई टॉक्ड अबाउट आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं सर्टिफिकेशंस की वजह से. नाउ इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट आपने सर्टिफिकेशन कौन सा करना है. सबसे पहली बात और डिस्क्लेमर और अदर वार्निंग, प्लीज डू नॉट डू सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन. इट्स एन अटर नॉनसेंस. बिल्कुल 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 भी मत करना. कोई भी कॉलेज यूरो टॉप 20 हो, 50 हो, 70 हो, 80 हो, मायने नहीं रखता. मैंने सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन पे एक वीडियो बनाई है डेडिकेटेड, वो आप देख लेना, आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी, शांति से उसको देख लेना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. नंबर 1, यू हैव टू डू सर्टिफिकेशंस जहां पे वो आपको हेल्प करे आपका इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. राइट, आपका जो इंटरव्यू होगा एमबीए का, जो भी आईएम का नॉन आईएम का आपको कॉल आएगा, वो क्रैक करने के लिए वो आपको हेल्प करना चाहिए. वैसे आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं. तो यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन रूल बताता हूँ और अगर एक काइंड ऑफ आइडिया देता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, ये ऑलवेज काम आएगा. इफ यू डू समथिंग लाइक दिस, इट्स गोना हेल्प यू 5000%. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. नंबर 1, व्हेन यू डू द सर्टिफिकेशंस, तुम्हारा जो सर्टिफिकेशन है भाई मेरे, that certification has to be in line with your future MBA specialization. मतलब अगर फाइनेंस में करना है तो फाइनेंस का हो, मार्केटिंग में करना है तो मार्केटिंग का हो, एचआर में करना है तो एचआर का हो. That's the major rule. That's the most important thing for the IIMs. जो IIM के प्रोफेसर से, I myself is a panelist to couple of B schools and I still speak to people, a lot of seniors and the senior professors of the IIMs. This is what exactly they are looking for. Number 1. Number 2, that's what is upward approach, right? Then there is something called as inward, because sir मुझे तो पता ही नहीं मुझे specialization क्या करना है. Then in that case, what should I do? Then what you have to do is, number 1, you have to do some certifications which are in line or has a synergy with your graduation का stream or your work ex. So you are an engineer, you have no idea तुझे marketing चलना है कि तुझे finance चलना है, operations करना है कि HR करना है, you have no fucking clue. I would advise you that you should do such kind of certificates जो आपके engineering के syllabus के साथ हो. For example, 6 Sigma. अब आप बोलोगे कि मुझे तो HR करना है, मुझे ऐसा लगता है, but I'm not sure. But 6 Sigma can help you a lot because 6 Sigma is actually applicable and helpful in all sort of companies बोलो या फिर profile बोलो. Marketing में भी चलता है, HR में चलता है, finance में उसका काम है, operations में उसका काम है. But the $1,000,000 question here is that अगर आप 6 सिग्मा करते हो, एटलीस्ट आप 6 सिग्मा के सर्टिफिकेशन के बारे में कुछ बात कर पाओगे. अगर आपने बोल भी दिया कि मेरे को स्पेशलाइजेशन पता नहीं है, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, एटलीस्ट तुम बोल सकते हो कि मैंने जो सर्टिफिकेशन करा है इसकी कुछ वैल्यू एडिशन है मेरी जिंदगी में. दैट्स द रूल नंबर 1. द अदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई विल गिव एन एग्जांपल. आप इसको इंटरव्यू में कैसे सेल कर सकते हो. सो वी हैव दिस प्रोग्राम दैट्स कॉल्ड एज CFAP, व्हिच इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट प्रोग्राम. So you can, as a student, you can say that, okay, great. So I have done a program or I have done a certification. It's called a CFAP. It is based on the practical finance. यहाँ पे एक jargon आ गया, practical finance. In this, I have also undergone a summer internship for like 3 months, or I have also undergone for the live project, which went round about like 3 to 4 months, wherein we were supposed to identify multi-bagger stocks. I started this program in the year 2019 or 2020, you can say that. And I undergone this entire process of R&D, and I recommended a share called as Tanla, and eventually that share did become a multi-bagger, and it gave round about 825% return over a period of time in a year's time. Boom! So here you are talking about the real stuff. Here you are talking about something that can initiate a discussion with your faculties, because stock market is a favorite subject of everybody in today's day, right? So if you're talking about stock market, आपने क्या बोला? आपने एक CFP का सर्टिफिकेट करा. पहले पूछेगा, tell me what is CFP? So you can say that Certified Financial Analyst Program. What do you mean by practical finance? Learning the finance from a ground level, wherein the theory meets practical approach. That's even cool because that's what the IIMs are looking at. Then you also undergone a live project or a summer internship, जहाँ पे whatever you've learned via concept, practical knowledge, case studies, right? You actually applied that, you put in your brains onto that particular topic, and you came up with R&D wherein you found a share. Now, why did you find that share? What made you to call it as a multi-bagger? Then you can give them all the
तुम्हारा 90% इंटरव्यू खाली उसी पे चलेगा, because you just showed them an achievement which is not that common. You can make it up little bit, right? You can probably give them a, अरे come on यार, मतलब तुम फ्यूचर में ही जाओगे, जब भी तुम बात करोगे तो फ्यूचर में जाओगे, बिकॉज अगर आप 22 में बात कर रहे हो, आप 2021 का कोई भी शेयर का एग्जाम्पल उठा के उसको बता सकते हो, राइट? बिकॉज दिस इज व्हाट द IIMs are looking at. So the rule is always do certification जहां पे तुमने कुछ प्रैक्टिकल करा होगा, जहां पे तुमने दिमाग यूज करा होगा, जहां पे तुम्हें प्रैक्टिकल चीजें पता चली होगी, राइट? ये बहुत काम आता है. बट सर ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या पंगा होगा? क्या पंगा नहीं होगा, पर वो सर्टिफिकेशन करने के बाद सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे. अगर तूने खाली एक सर्टिफिकेशन करा है, आई से दैट तुम्हारा 20% चांसेस है. बट अगर सर्टिफिकेशन विद लाइव प्रोजेक्ट, कोई समर इंटर्नशिप, या फिर अगर तुमने प्रैक्टिकल लेवल पे उसको अप्लाई करा है, तुम्हारे चांसेस आर क्लोज टू 80% और 90%, because that's how you initiate the talk with the panel, right? Six Sigma, अगर तुमने Six Sigma सर्टिफिकेट कर लिया, there are so many companies available in today's time. They want interns. Go to internshala.com, something like that, and ask them for a project. Even it is for 15 to 20 days, you can tell them कि मैंने actually DMAC को use, DMAC is one of the it's one of the funder that we learn in Six Sigma. You can tell them कि सर मैंने DMAC literally use करा है, मैंने root cause analysis literally use करा है, मैंने POTUS 5 forces literally apply करके देखा है, and I know how does this should work. I'm not sure, but in a real way, I know how do these things are working in a real life. They will be more than happy अगर आपने ऐसा सर्टिफिकेशन करा है तो. People say that, okay, so I speak to a lot of people as students sometimes, they ask for some new stuff, cryptocurrency का certification, artificial intelligence का certification, blockchain का certifications. Guys, understand this. Are you gonna get an exposure in this kind of industries or work? The answer is no. राइट? आप सर्टिफिकेट करोगे, मैक्स टू मैक्स इक्का दुक्का केस स्टडी मिलेगा यहां वहां से. वो केस स्टडी क्या होता है? वो केस स्टडी पास्ट होता है, जो पहले कुछ हुआ था उससे आपने कुछ तो सीखा. कहीं पे आपने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया क्या? नो. एंड गाइस अंडरस्टैंड दिस, दीज आर वेरी नीश एरियाज. इत्तू से है वो, दे आर लाइक बेबी, छोटा सा बेबी है वो, अभी तक वो मैच्योर भी नहीं हुआ, दे आर प्रीटी वर्जिन इन इंडियन मार्केट एज सच. गेटिंग माय पॉइंट? यस, they have a terrific future, but just because they sound cool and this is something new, if you do that, you might be into trouble अगर उसकी concept आपको नहीं पता है तो. Because by the time 2022 comes in the month of January, when you're facing one of the IIM or the top B school, by that time blockchain, AI, cryptocurrency, they might have changed a lot. क्रिप्टो के बारे में लोगों को नफरत भी होगा या फिर लोगों को प्यार भी होगा, they're gonna change, there is no doubt about it, but financial analysis will remain mostly the same. It's sort of a static thing, right? So do the certification जहाँ पे exposure मिले. Do not do the certifications because they sound cool or they are थोड़े से हटके. Never do that. तो आपका सर्टिफिकेशन करने का एक ही मोटो होना चाहिए कि मेरे को कन्वर्ट मिले, कि मैं इंटरव्यू में जाके अपने बारे में कुछ ऐसी बातें करूं जो मुझे काम आए. यार जो हम करवाते हैं CFAP में, राइट? या फिर अगर आपने लिटरली किसी ब्रोकरेज कंपनी के साथ, किसी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी के साथ फाइनेंस में काम करा है, जहां पे आपने रियली ये चीजें करी है, finding of those stocks and all that, yeah, you are anytime better than a CFA or somebody who is IPCC level 2. You are anytime better than those people because you have done something which is real in the market. You're getting my point? I'm not saying that you will be always better than them, but एक आइडिया लगता है कि स्टूडेंट ने कुछ तो करा है. So guys remember, आपका सर्टिफिकेशन वैसा ही होना चाहिए जो आपको एक एक्सपोजर दे. अंडरस्टूड? आई होप मैंने इतना डिटेल्ड में आपको बताया है, ये आपके डाउट्स क्लियर कर दिया होगा. मैंने पहले भी कहा था, on my channel I give lot of content which is really practical that helps you to crack the interviews and prepare for CAT. So guys, if not subscribed, kindly subscribe to my channel, stay tuned to Seduce Mentors, and kindly share my video and like my video. That's it from my side guys. If you have any question, put the comment on the video, I'll reply. Bye bye.